कि गोवर्धन मठ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य थे। इन्होंने गहन साधना के बाद वैदिक मंत्रों से 16 सूत्र ढूंढ निकाले जिनमें पूरा गणित समाहित है। द बेसिस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स आर दिस 16 one-line formula in Sanskrit, made up of 120 words. These formula एकाधिकेन पूर्वेण निखिलम नवदश शर्मम दशत ऊर्ध्वतिरेभ्याम। किसी को अगर संस्कृत का ज्ञान नहीं भी हो तो हिंदी में इनका अर्थ समझकर या इंग्लिश में इनका मीनिंग समझकर इनको यूज कर सकते हैं मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार अत्यंत मेधावी व्यक्ति भी अपनी मानसिक क्षमता का अधिकतम 20% ही उपयोग में ला पाता है और उसके मन की शेष क्षमता व्यर्थ ही पड़ी रहती है। लेकिन वैदिक गणित के प्रणेता पूज्य स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी के अनुसार यदि कोई व्यक्ति वैदिक गणित का नियमित अध्ययन करता है और सतत अभ्यास करता है तो मानव मस्तिष्क के विकास की गति 5 से 6 गुना अधिक बढ़ जाती है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स that by regular practice of Vedic mathematics the holistic development of human brain takes place. एक common misconception है कि Vedic mathematics is limited to shortcuts of arithmetic only. लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि Vedic mathematics can be effectively applied to almost all branches of mathematics. Today we will see how differentiation can be done in smarter and faster way by using Vedic math methods. Calculus, as we know, is the one of the most important branches of mathematics which deals with continuous change, and it has many applications in science, engineering and social science. There are two major branches of calculus: differential calculus and integral calculus. Differential calculus deals with instantaneous rate of change and slopes of curves. First we will see how successive differentiation can be done in faster way and easy way by using concepts Meru Prastar and Vedic math sutra Urdhva-Tirabhyam. Meru Prastar can be better understood with the help of this pyramidal structure of numbers. It is generally used to find out higher powers in binomial expansion. Though it is an Indian invention, but it is a misfortune that it is popularly known as Pascal's triangle today. The literal meaning of the sutra Urdhva-Tirabhyam is vertically and crosswise. As the name suggests, this method includes steps involving vertical multiplication and crosswise multiplication. It is general method of multiplication in Vedic mathematics. These are some basic formulas of differentiation. Present method of finding higher order derivatives of product of two functions is based on this product formula. Here u and v are two functions in x. The simple product formula is first function as it is into differentiation of second plus second derivative of first. First we find first derivative, then differentiation of first derivative will give second derivative. Then differentiation of second derivative will give third derivative. But Vedic mathematics approach is totally different. Sorry, slide change नहीं हो पा रहा है. Left. Yes, this one. Okay. Okay. For Vedic mathematics method, we write two functions one below other, u and v, and their derivatives in respective rows u1 and v1,
We write row of Meru Prastar as topmost row, 1 1. Second row of Meru Prastar. We use crosswise rule. U times V1 plus U1 times V will be the answer. For second derivative, there is no need to find first derivative by Vedic math method. We write two functions one below other. Their derivatives, first derivative of u is u1, second derivative is u2. For v, derivatives are v1 and v2. We write row of Meru Prastar 1 to 1 as topmost row. We do vertically and crosswise multiplication like 1 times u times v2 plus 2 times u1 times v1 plus 1 times u2 times v. So this will be the answer. Without finding first derivative, we can directly find second derivative by using Vedic math method. Similarly, for third derivative, Can you do that to last? we found 1 times u times v2. Where we use U? U2. Oh, by 1 times u times v2, sorry. Maybe the last problem is U to V1. 1 u v2, this will be the first. Last one. Then 2 times u1 v1. The next term is U to And 1 times u2 times v. Oh, I made mistake here. Sorry for That is U to. Yes. Right. For third order derivative, we write row of Meru Prastar 1 3 3 1. It is 11 to the power 3. We find 1 times u times v3 plus 3 times u1 times v2 plus 3 times u2 times v1 plus 1 times u3 times v. This will be the answer. Now, what represent U3 or V3? U3 third order derivative. u1 is first derivative of Yeah, u. U1. u2 is second derivative Del of u. cube U, del x cube. Like Okay. simple. u3 is third derivative of u. Okay. If you differentiate u 3 times, then you will get u3. Okay. So one can note there is no need to find first derivative and second derivative. Directly you can find third derivative in a single line. Similarly, for fourth order derivative, we write 14641, the row of Meru Prastar. Then we use vertically and crosswise rule. 1 times u times v4 plus 4 times u1 times v3 plus 6 times u2 times v2 plus 4 times u3 times v1 plus 1 times u4 times v1. That is U VM. Last one is U. Yes, last one is 4 times 1 times u4 times v. Yes. Columns which are equidistant from beginning and end, that we are cross multiplying here, sir. By mistake I have written this before. It is 1 times u4 times v it will be. Similarly, we can find nth order derivative, and this will be equivalent to Leibniz theorem for nth derivative of product of two functions. But Leibniz theorem nowhere describe crosswise rule, vertical and crosswise method. Here is one example. If you find third derivative by present mathematics method, y equal to e to the power 2x log x is function. First we find first derivative by using product rule. Then we find second derivative by differentiating first derivative. डिफरेंशिएशन सबको आता है, मैं केवल मेथड बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, और दोनों के कंपैरिजन हो जाएगा प्रेजेंट मैथमेटिक्स मेथड और वैदिक मैथ्स मेथड। फिर दोनों में से जो आपको इजी लगता है उसको आप यूज कर सकते हो, कौन सा बेटर लगता है आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों मेथड्स को। दिस इज सेकंड डेरिवेटिव। फिर सेकंड डेरिवेटिव का हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन अप्लाई प्रोडक्ट रूल, फिर सिंप्लीफाई करते हैं। सो वी फाउंड दिस आंसर ऑफ थर्ड डेरिवेटिव। तो आप देख सकते हैं कितने स्टेप्स हम लोगों ने करी थर्ड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए। लेकिन वैदिक मैथ्स मेथड से हम सिंगल लाइन में आंसर फाइंड कर सकते हैं। We write two functions e to the power 2x and log x one below other. e to the power 2x का डेरिवेटिव 2e to the power 2x, 2e to the power 2x का 4e to the power 2x, then 8e to the power 2x,
log x का 1 by x का minus 1 by x square, minus 1 by x square का 2 by x cube. We do vertical and crosswise rule. 1 times e to the power 2x into 2 upon x cube plus 3 times 2 e to the power 2x times minus 1 by x square plus 3 times 4 e to the power 2x times 1 by x plus 1 times 8 e to the power 2x times log x. This will be the answer. In single step you can find out answer. Amazingly how easy it is. आपने देखा कितना उसमें टाइम भी लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है. इसमें आंसर. ये कुछ और एग्जांपल्स लिए हमने सेम इस पर, इसको मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ. फर्स्ट डेरिवेटिव बाय यूजिंग वैदिक मैथ्स मेथड. सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वी कैन फाइंड डायरेक्टली इन सिंगल लाइन. This is again third order derivative. Here third order derivative at x equal to 0. So we can find first, second and third derivative and we put x equal to 0 directly here in these functions. Then we can apply vertical and crosswise rule. Means 1 times minus 1 times 0 plus 3 times 4 plus 3 times minus 6 times 3 plus 1 times 6 times 1. This will be the answer. सिंगल लाइन में हम आंसर फाइंड कर सकते हैं इस मेथड से. दिस इज फोर्थ डेरिवेटिव. फोर्थ डेरिवेटिव को भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं. I hope all of you understood this method of differentiation. Okay. So we can go for a second method of differentiation. Differentiation of rational functions. Rational function is simply ratio of polynomial. Polynomials mean an algebraic expression containing one or more terms, and in each term power of variable should be non-negative integer. The same questions can be done by vertically and crosswise rule. Here u upon v is a rational functions. U and v are polynomials here, and v is not equal to 0 and both are differentiable in x. Present method is quotient rule. All of you know. Second differentiation, denominator differentiation of numerator minus numerator differentiation of denominator over denominator square. In modern mathematics method, we have taken simple ratio of two quadratic binomials to differentiate. We apply quotient rule. Quotient rule is easy to apply. Quotient rule भी easy होता है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है, simplification takes time. सिंप्लीफाई करते हैं तो बहुत सारी टर्म्स इन्वॉल्व हो जाती है इसमें. आप देखेंगे हमने डिफरेंशिएशन किया, देखिए न्यूमरेटर हैविंग 12 टर्म्स. ये तो हमने ट्राइनोमियल्स लिए, लेकिन अगर हम क्यूबिक ले लेते और 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स ले लेते तो 24 टर्म्स होती न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. देन थिंक ऑन इट, हाउ मच टाइम विल इट टेक, और इट इज दिस मेथड विल बी प्रोन टू एरर. एरर के कितने चांसेस होते हैं, बट वैदिक मैथमेटिक्स इस मेथड इज लेस प्रोन टू एरर और सिंगल लाइन में आंसर्स देती है. अब हम वैदिक मैथमेटिक्स का मेथड देखते हैं सेम क्वेश्चन को करने के लिए. This is the answer. Now for Vedic maths method, simply we construct a rectangular array. We write coefficients of x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2, below x to the power 0, x to the power 1, x to the power 2 in the columns. Then again we do crosswise rule, but this time right to left. We multiply 5 times 3 minus 2 times 6. पहले हम प्लस कर रहे थे, ये we are putting minus sign in between डिवीजन में. और एक्सपोनेंट्स का जो डिफरेंस आता है उसको भी हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे. दिस विल बी द फर्स्ट टर्म ऑफ आंसर. पहले हमने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को ट्रीट किया.
उसके बाद फर्स्ट और थर्ड कॉलम को ट्रीट करना है हमको सेम वे से, राइट टू लेफ्ट प्रोसीड करना है. We do 4 times 3 minus 6 times 1, and this will be multiplied to difference of exponents 2 minus 0. This will be coefficient of x. We got second term here, and for last term for last term we take last two columns. Again, right to left we multiply, like 4 times 2 minus 5 times 1, and difference of this partial products will be multiplied by difference of exponents 2 minus 1. This will be coefficient of x square. This will be third time. और denominator तो हमको मालूम है कि denominator is square of given denominator. Similarly, the same question, denominator is of degree 1, लेकिन इसमें हम ले सकते हैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 ले सकते हैं, और सेम मेथड से सिंगल लाइन में हम आंसर फाइंड कर सकते हैं. लेफ्ट टू राइट भी हम प्रोसीड कर सकते हैं, aq माइनस bp टाइम्स 2 माइनस 1. फिर फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हम ट्रीट करें ar टाइम्स cp माइनस 2 टाइम्स 2 माइनस 0. दिस विल बी कोफिशिएंट ऑफ x, और लास्ट के लिए br माइनस cq. दिस विल बी कांस्टेंट टर्म. तो दिस विल आंसर. लेफ्ट टू राइट भी प्रोसीड कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. अगर 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल्स हैं, अगर इसको हम मॉडर्न मैथ्स मेथड से करते हैं तो देयर विल बी 24 टर्म्स इन द न्यूमरेटर. लेकिन वैदिक मेथड से हम सिंगल लाइन में आंसर इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं. कंपोजिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हमको फाइंड करना है, तो भी डिफरेंट थोड़ा सा मेथड है. फंक्शंस को हम सेपरेटली लिख लेते हैं, वन बिलो अदर. दोनों का डिफरेंशिएशन हम फाइंड करके टुवर्ड्स राइट ऑफ ईच फंक्शन लिख लेते हैं. वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, a टाइम्स cos ax प्लस b विल द आंसर. प्रोडक्ट रूल में पहले ही बता चुका हूं आपको. क्वेश्चन को भी हम देख सकते हैं सेम वे से, राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे. 1 टाइम्स sin x माइनस x टाइम्स cos x अपॉन sin x होल स्क्वायर. डिफरेंशियल फंक्शंस का भी हम सेम मेथड से कर सकते हैं. लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग लॉगरिथम. ये रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो मेरे पेपर में ये सब देख सकते हैं. इंटीग्रेशन भी हम पूरा वैदिक मैथ से कर सकते हैं. डिफरेंशियल इक्वेशंस भी हम यूज कर सकते हैं. तो माय प्रेजेंटेशन कम्स टू एन एंड. लेट मी कंक्लूड. आपने देखा कि these methods are very easy to learn, fast to use and less prone to error. अगर इन मेथड्स को इंक्लूड करते हैं करिकुलम में, तो स्टूडेंट्स ऑफ लोअर सेकेंडरी क्लासेस विल आल्सो बी एबल टू डू प्रॉब्लम्स ऑन कैलकुलस. इतना इजी मैथमेटिक्स है, एंड इट इज ब्लेसिंग फॉर एस्पिरेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. थैंक यू. कोई क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इनवाइट व्हाटएवर योर क्वेरीज आर.